अगर ये टोटल असेट टू डेट रेशियो है तो इट इज 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000. What's the answer coming for total asset to debt? नहीं भाई, total asset to, हाँ sorry, 4.66 is to 1. And for debt to total asset? 0.21 is to 1. 2:1 is to 1. Check कर लें. Yes. 1,50,000 upon 7 lakhs. Yes. 0.21 is to 1. Absolutely correct answer. Heard this well, children? Pakka? Yes, sir. Please open to the fourth last page of the booklet, children. You will be getting the ratio titled as debt to capital employed on the right side and debt to total asset on the left side. Debt to total asset you have already done. I repeat, you have already done. तो हम उसको नहीं करने वाले, हम debt to capital employed करेंगे. सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? चलिए, बहुत सिंपल रेशियो है, बहुत सिंपल रेशियो है. सबसे पहले मैं चूरन कॉपी कर लूं. शेयरहोल्डर फंड्स followed by non-current liabilities followed by current liabilities, you will get total. Non-current assets, current assets followed by total. Is that understood well? Yes, sir. Children, the total of shareholder funds and non-current liability is called as what? This is capital employed. Correct? And children, the total of non-current liability and current liability is called as what? Total tax. Is that understood well? So if I say कि 20 crore rupees shareholders का invested है company में, 5 crore rupee debenture holders का, and current liabilities are worth 3 crores. What is the total of liability? 28 crores. Definitely same would be the total of asset. 20 crore worth of non-current assets we have and 8 crore worth of current assets. So children, हम अगर capital employed की यहाँ पे बात करेंगे, what would be the value of capital employed? 25 crores. Yes or no? So more money is invested by the shareholders in this company or by the debenture holders? By the shareholders. Correct children? अब so called आप उस लॉजिक को मत अप्लाई करिएगा कि कंपनी में डिबेंचर होल्डर्स का प्रोपोर्शन कम है वगैरह वगैरह वगैरह. व्हाट इट क्लियर? आपको बस ये कंपेयर करना है दैट मनी कंट्रीब्यूटेड बाय डिबेंचर होल्डर्स इन द टोटल कंट्रीब्यूशन इज लेस और मोर चिल्ड्रन इन प्रोपोर्शन. 25 करोड़ में दे हैव कंट्रीब्यूटेड ओनली 5 करोड़. सो 5 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कोई बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है. इजिली इन फ्यूचर हम इस 5 करोड़ को अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से भी पे कर पाएंगे, एज वेल एज बाय सेलिंग एसेट्स वी कैन पे देम. इज दिस हर्ड वेल? चलिए, so let's start with this. Put down the meaning here children, and the meaning is it establishes the relationship. Please do not write shorthand as I am writing. Between long-term debts and capital employed. The formula for debt to capital employed is pretty simple. It's long-term debts divided by capital employed. Logic understood well? Below that, you are supposed to put the components. Components are 2 in number. First is long-term debts
याद है सबको? वी डिड दिस 5-7 formulas we made or more than that while doing debt equity ratio. हमने लॉन्ग टर्म डेट के ढेर सारे फॉर्मूले लिखे थे. If total debt is given to us, we want NCL, what to remove? If capital employed is given to us, we want NCL, what to remove? If total of liability is given and we want this 5 crores, what to remove? CL and SF. If total of asset is given to us, definitely the same would be the total of liability. Out of that, if we remove shareholder funds and current liability, where we land upon? जैसे आप exactly वैसे ही हो जाएंगे. So within brackets, do write refer debt equity ratio. And for capital employed, multiple formulas are there. The simplest formula, shareholder funds plus non-current liability. Shareholder funds को थोड़ा सा expand कर लेते हैं. Equity share capital plus preference share capital plus reserves in surplus minus losses plus long-term borrowings plus long-term provisions plus other long-term liabilities. We did nothing. हमने सिर्फ SF और NCL को elongate कर दिया. If children, total of liability is given to us, क्या subtract कर दें कि capital employed आ जाए? Current liability. Current liability. And if total of asset is given to us, तो obviously true, जो भी total of asset होगा वो total of liability होगा. तो अगर बच्चों आपको ये 28 करोड़ पता है, तो ये भी 28 करोड़ हो गया. किसको उड़ा दें तो 25 आ जाए. Current liability. Understood how we made the formulas? At the top I am writing formula E. Non-current asset plus current asset. This is the expansion of total assets. Minus what? Current liability. Formula F. Can anybody answer me what is CA minus CL? Working capital. So NCA plus working capital equals to capital employed. Isn't it? Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So this ratio simply tells us what much or how much or up to what extent we are dependent on outsiders funds and up to what extent we are dependent on owners funds. अब बात आती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की, जो मैंने ईयर्स अगो तो नहीं बोल सकता, वीक्स अगो या मंथ्स अगो आपको एनालिसिस करवाया था. फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स एट लार्ज, ध्यान दीजिएगा, ओनली शेयर कैपिटल इज गुड, शेयर कैपिटल डिबेंचर इज गुड, डिबेंचर इन लार्जर प्रोपोर्शन इज गुड और डिबेंचर इन स्मॉलर प्रोपोर्शन इज गुड. डिबेंचर इन लार्जर प्रोपोर्शन याद करिए 30 लाख वाले एग्जांपल को. तो यहाँ पे बच्चों क्या डिबेंचर इन लार्जर प्रोपोर्शन है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब डिबेंचर लार्जर प्रोपोर्शन पे होगा तब इनका बेनिफिट ज्यादा होगा. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ये इसका सिग्निफिकेंस है. लॉजिक अंडरस्टूड दैट न्यूमरेटर वैल्यू शुड बी मोर देन द डिनोमिनेटर. ना ना ना, गलत. ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? 5 करोड़ कभी भी 25 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये बढ़ता जाएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो बढ़ जाएगा भाई. सिर्फ आप ये बोल सकते हैं द परसेंटेज प्रपोर्शन और द एक्सटेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेट्स शुड हैव हायर प्रपोर्शन इन द टोटल. समझ में आ गया कि नहीं? चिल्ड्रन हर्ड दिस? Yes, sir. क्विकली कंप्लीट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 41 to 45 में आपने अभी टोटल एसेट टू डेट एंड डेट टू टोटल एसेट निकाला था. In those very same questions, we'll be calculating what? Debt to capital employed. Debt to capital employed. और जो homework आपको मैं total asset to debt ratio का दूंगा, in the very same homework, you are supposed to calculate debt to capital employed until unless I do not give you the new study material. Okay, तो जो बुकलेट मैंने आपको दी थी वो लास्ट ईयर के एडिशन की थी, तो उसमें ये रेशियोज नहीं थे. These ratios have been added in this year only. तो आप उन्हीं क्वेश्चंस में इसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलिए.
Let's get down back to question number 41 children. सबको मिल गया? 40th, सॉरी नॉट 41, 40th. चलिए आपके सामने है चिल्ड्रन. मैं आपको अब कॉम्पोजिशन फिर से लिखने को नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने वैल्यूज ऑलरेडी डिराइव की हुई हैं. आप डेट इक्विटी रेशियो में भी सेम क्वेश्चंस कर चुके हो, प्रोप्राइटरी में भी आपने सेम क्वेश्चंस किए हैं, तो पूरी वैल्यूज आपके पास लिखी हुई हैं. अब हम सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे और फाइनल वैल्यू लिखेंगे. ओके, सो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, द फॉर्मूला इज व्हाट चिल्ड्रन? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन, बट सर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का तो फॉर्मूला लिखा ही नहीं है. नहीं लिखा तो लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? लॉन्ग टर्म डेट में चलने 3 चीजें आएंगी. इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस OLTL प्लस LTP अपॉन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. सर इसमें एक चीज और बताते हैं आपको. सर ये कट गया पूरा, न्यूमरेटर में वैल्यू 0 हो गई, फाइनल आंसर 0 आ जाएगा. दिस इज नॉट इंग्लिश, दिस इज मैथमेटिक्स बेसिकली. What is the value of long term borrowings? 4 lakhs. What is the value of other long term liabilities? People may be confused, sir आप दोनों में क्यों लिख रहे हैं? भाई नीचे भी तो लिखना ही है ना, उसको उसका पार्ट है. And long term provisions, correct, plus 12 lakh, 2 lakh and 1 lakh. Numerator is 5 lakhs and denominator is what? It's 12, 13, 14, 15 and 5, 20 lakhs. It's 1/4 children. Reduced as, मैथ्स के हिसाब से तो शायद आना चाहिए 0.25:1. Be quick. So let's continue with the same thing in question number 41. Do let me know the formula again for debt to capital employed. It's debt upon capital employed. In the population of debt, what all items do we have here in the question, children? Only Long-term borrowings. And in capital employed, we have with this what? Share capital and reserves and surplus. Plus, we have share application money pending allotment. What is the value given as long-term borrowings? 1,50,000. What is the value of share capital? 8 lakhs. Reserves and surplus? Money 1 lakh. received against, oh sorry, share application money pending allotment? 2 lakh. 2 lakh. What's the numerator total? 150. 1,50,000. Denominator? 1250. 0 0 तो कैंसिल होगा, मैथमेटिक मत यूज करिएगा सर, 5 भी कैंसिल कर देते हैं. So 15 upon 125. It's 5 3s are 15 and 5 25s are 125. 3 upon 25 is what? 0.12 0.12:1. 1:1. Difficult? Very great rocket science. So बस वो चूरन याद कर लीजिए. कोई भी रेशियो ऐसा है ही नहीं जिसका आंसर ना है. 99% स्टूडेंट्स तो बेचारे कंफ्यूज ही रहते हैं कि कैसे ये चीजें डिराइव होंगी. ये क्वेश्चंस तो एकदम हलवा टाइप है, बट जो फंस जाते हैं बीच बीच में, वहां वो चूरन ही काम आता है आपको. एंड दैट्स द ब्रह्मास्त्र, और दुनिया की किसी किताब में दिया ही नहीं है ये चूरन. सुनाई पड़ी बात? पक्का? लोग कहेंगे सर आप कहाँ से खोज के लिया इसको. मैंने अपने MBA में जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था, वहां बुक्स में ये सब चीजें थी.
तो आई थॉट कि दिस इज गुड फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। खोपड़े में बात गई। तो हमारे देश में 9th क्लास का टीचर फिजिक्स ठीक से नहीं पढ़ा पाता, बट आईआईटी का प्रोफेसर क्लास 6 के बच्चे को ठीक से फिजिक्स समझा देता है, क्योंकि उसे साइंस आती है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? चले आगे, चलिए। Yes, sir. 42nd हलवा क्वेश्चन है, हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स द फॉर्मूला चिल्ड्रन फॉर डेट इक्विटी रेशियो, सॉरी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड? डेट अपॉन capital employed. Debt constitutes what all items? Only 8% debentures. And capital employed constitutes with this what, children? Share capital and reserves and surplus. What is the value of debentures? 72. 72,000. And share capital how much? And reserves and surplus how much? What's the denominator total? 8,97,000. 3 zeros got cancelled. 72 upon 897. आधा आंसर मैंने बता दिया, आधा आप बताइए क्या आएगा बच्चों आंसर। Some people are waiting. अभी 92.7 रेड एफएम से आएगा 0.80 0.80:1. और 08 72 upon 897 0.08 आएगा, 80 नहीं आएगा। Got it? Yes, sir. Question number 43. What is the value of debt in this question, children? 9 lakh. 9 lakhs. And what would constitute so-called capital employed, children? Share capital, reserves and Reserves and surplus, surplus. Long-term borrowing. Long-term borrowing. समझ में आया? सेट और सबसेट आपने पढ़ा है ना चिल्ड्रन? सेट थ्योरी पढ़ी होगी। Yes, sir. Yes. कोसेंट्रिक सर्कल्स पढ़ा होगा ना आपने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. बस वही Yes, मैथ्स अप्लाइड है। ये जो है क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और ये जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसके अंदर आ चुका है। अब समझ में मैथ्स क्यों पढ़ाई गई थी? कोसेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे काम आता है। समझ में आई बात कि नहीं? लोग कहेंगे गजब सर, हमने तो मैथ्स के सवाल किए, आपने मैथ्स पढ़ी है। मैंने पढ़ी 10वीं तक है मैथ्स, बट बहुत कायदे से पढ़ी जितनी पढ़ी है। तो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। समझे? पक्का? बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। कॉन्सेप्ट क्लास में चल रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में गया, जो नहीं पढ़ रहे उनके ऊपर से गया, और जो थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं उनको शायद टैंजेंट बन गया। ये टैंजेंट का कॉन्सेप्ट है। गॉट इट क्लियर? ना एक्सटर्नल पॉइंट से जब लाइन टच करते हुए निकलती है तो दैट्स अ टैंजेंट। क्विकली चिल्ड्रन, क्विकली। सो इट्स 9 lakh अपॉन व्हाट? 39 lakh. What's the answer? 0.23:1. Very good. 0.23:1. Easy? Easy, children? तो क्वेश्चन नंबर 44, 45 आप कर लीजिएगा सॉल्व। एंड जितने क्वेश्चन टोटल असेट टू डेट रेशियो के हैं, गॉट इट क्लियर? मैं आपको होमवर्क असाइन कर देता हूं, आप उसी में सॉल्व कर लेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज ये वाला रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। टीएसजी वाले सेट में होमवर्क लिख लीजिए। चलो, टीएसजी वाले सेट में हमने टिल 45 सॉल्व कर लिया था शायद। 46 से लेकर टिल 53
नहीं, बीच में क्वेश्चंस बचे थे टोटल असेट टू डेट के, वो नहीं दिए थे, वो कर लीजिएगा। 46 to 53, दिस इज इन TSG, ओके। इन DKG प्रायर टू एडिशनल क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं डेट इक्विटी रेशियो के अप टिल 33 चिल्ड्रन। 34 to 39 कर लीजिएगा, 34 to 39, और इसमें ये वाला रेशियो भी निकाल लीजिएगा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड एडिशनल क्वेश्चंस में चिल्ड्रन मार्क कर लीजिए, यू हैव डन अप टिल 152, 153 एंड 153 के बाद कोई भी नहीं, ओनली 153। समझ गए होमवर्क क्या है?